Now we will study about Fourier series. So suppose we have a function f of t and it's a periodic function and its period is 2t. Remember, period is 2t. If we take period t, then we have to do t by 2, है ना? So remember, we are having a function, periodic function with a period 2t, and function can be expressed as a naught by 2 plus summation over n not equal to 1, so infinite, n cos n pi by t plus bn sin n pi by t. So these will be the Fourier coefficient. N not equal to 1 by t minus t to t f of t dt. Okay, n equal to 1 by t minus t to t f of t cos n pi by t dt. N equal to 1 by t minus t to t f of t sin n pi by t into t. Now first example is, suppose we have a function f of t equal to minus 1 and we have the limits of the minus t to t. So what will be the period? Period will be 2t. So we know how we'll expand this a naught by 2 plus an cos n pi by t plus b n sin n pi by t. So first of all we have to calculate coefficients. So a naught equal to 1 by t minus t to t f of t dt. Put the value minus 1. So we are left with this minus 2, and n equal to minus 1 by t minus t to t f of t cos n pi by t t dt. So 1 by t minus 1 multiplied by cos n pi by t dt. Now minus 1 by t, and the integration of cos equal to sin n pi by t, and t over n pi will be coming out minus t by t. You know the integration. The coefficient of any trigonometric function will be in the denominator. Okay, so after we put the value, what we will have? Cos sin n pi will be 0. This sin n pi will be 0. Now bn is 1 by t minus t to t f of t sin n pi by t dt, and f of t equal to minus 1. So we are left with this, minus is outside the integration, and the integration of sin equal to cos n pi by t minus cos. So minus will be plus. Minus will be plus, and the limit value minus t to t. So in this condition, what will we do? T to t cancel, minus 1 by n pi, and if we put instead of t this, okay, so we left with cos n pi minus cos n pi minus cos n minus pi. Okay, and cos is even function. So because cos is an even function, so cos minus theta equal to cos theta. So both have value minus 1 raised to the power n, so it will be 0. Now so we have f of t equal to only a naught by 2. So a naught by 2 equal to minus 2 by 2 equal to minus 1. So sorry, so we are left with this constant function gives same constant function in Fourier expansion. Okay, so we have the value f of t equal to minus 1. This was the constant function. The Fourier function will be same. So every constant function will give the same constant function in its Fourier expansion. Remember that. Now we have another equation, f of t equal to t, period is minus pi se pi, means whole period is 2 pi, and if we do the graph, we have this graph of function of t, y equal to f of x equal to y. This is the graph. Now we know f of t equal to a naught by 2 plus a n cos n pi by t plus b n sin n pi by t, a naught equal to 1 by t minus t f of t dt, 1 by t minus f of t की जगह फंक्शन रख दिया, t dt माइनस पाई से पाई लिमिट लग दी. So 1 by t equal to e square by 2 minus pi से pi square minus pi square, even function is 0. No, यहाँ से भी देख सकते थे अपन. We can look the solution of this
a naught from this integration also. Because t is a odd function and limit is minus a to plus a, so we know that integration of odd function in the limit of minus a to a plus a is always 0. And n equal to 1 by t minus t to t f of t cosine pi by t dt equal to 1 by t minus t to t and t cosine pi by t dt. So what we have this integration. Now is this integration is a even function or odd function? We can say it's a odd function because cos it's a even function and it's a odd function, so ultimately it will also lead to 0. Without solving we can see, but if you want to solve you can solve with Euler method or with instant method. How will solve? First function integration of second function minus derivative of first function integration of second function and derivative of this whole. So just differentiate this differentiate of t is equal to 1 and integration again with of these two, so t square and square pi square, and this after solving you will lead to 0 as I said. And look here, bn equal to minus t to t 1 by t minus t to t f of t sin n pi by t dt. And now this is an even function because sin is also an odd function and t is also an odd function. Now you will say, sir, here is sin n pi by t and you will just sin nt. So we know that here period is 2 pi and t is pi. So put the value t equal to pi, and here also t equal to pi. So pi will be cancelled and sin nt will be left. So 1 by pi first function integration of second function, sin का माइनस cos होता है and coefficient will be downwards, and minus डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos क्या होता है, sin होता है, and n square minus pi to pi. And we can say it's even function 2 equal to, and you can also apply one cheat code here. What is cheat code? Since it is an even function, so we don't have to put the lower limit, just do 0 to pi. But I have done with full limit, so what we are left with this. Put upper limit, pi minus pi will be 0, so this will be 0 and this will be 0, sin n pi will be 0, and we will determine the value of this. So you can say, if you put the value of pi upper limit minus pi by n and lower limit minus pi by n, so cos n pi minus cos n pi minus plus, so minus 2 pi n cos n pi, so minus 2 pi n minus 1 raised to the power n. Okay, just put the limits pi n minus pi. Okay, ठीक है. This will be final answer. So we have a0 equal to 0, n equal to 0, and bn value of this. So f of t equal to n equal to 1 to infinite minus 2 by n minus 1 raised to the power n sin nt. Put those values in this and we will get this equation. Now we can expand this. How we can expand this? Just put the value n equal to 1, so sin nt minus by. If put n equal to 2 this and n equal to 3 this, we can draw these functions. Another question, 0 t minus pi से 0 to pi. Always focus on those limits. Okay, अगर यहाँ pi by 2 दिया है ना, तो फिर यहाँ t by 2 आ जाएगा, सब दूर ध्यान रखना है ना, बाकी सब तो हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको करना है फंक्शन को, ये a नोट की वैल्यू निकालनी है. सो द वैल्यू ऑफ a नोट विल बी 1 by pi minus pi to 0 because function is defined in two limits, minus pi to 0 and 0 to pi. ये 0 to pi आएगा ना. सो हियर फंक्शन इज 0 माइनस पाई से 0 में, और यहाँ आएगा t. सो t dt t स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 1 by t f of t cos n pi by t into dt 1 by t. So you can also put pi here because the interval is pi. Period is 2 pi, so t is pi. cos n t आ जाएगा यहाँ पे
सो वही जैसा ऊपर करा था ऐसा ही, ये ओड फंक्शन है तो क्या आएगा अपना, लिमिट 0 से पाई, इसलिए सोल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये टू पाई, पुट द लिमिट पाई sin n pi 0, it will be 0, only this will be left 1 by n square cos n pi minus 1, so we left with this, solve this also, we will have this है ना। अब तो आ गया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ होल। मैं तो सिंपली इंस्टेंट मेथड यूज़ करता हूँ। देखो क्या करता हूँ मैं, ये टी इसका डिफरेंशिएशन कर दो और यहाँ जो बचा इसका इंटीग्रेशन कर दो, हो गया काम खत्म। सो वी लेफ्ट विथ दिस अनदर क्वेश्चन साइन टी। देखो बस अब वही है, बस खाली इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। 1/t माइनस टी टू टी एफ ऑफ टी टी, 0 से पाई में, पाई से 2 पाई में 0 है, इसलिए ओनली 0 से पाई में डिफाइन फंक्शन होगा। और साइन पाई का क्या होता है, कोस पाई, ठीक है, माइनस कोस पाई, तो माइनस कोस पाई क्या होगा, कोस 180 आ गया लिमिट। 1/t माइनस टी टू टी एफ ऑफ टी कोस n पाई बाई टी टी डी टी 1/पाई 0 to पाई साइन टी कोस n टी डी टी 1/पाई साइन टी कोस n टी इक्वल टू साइन n टी बाई n इंटीग्रेशन ऑफ कोस n टी फॉर इंटीग्रेशन कोस n टी साइन n टी बाई n। नाउ है ना, अब ये एंडलेस इंटीग्रेशन है, इसको करता रहना पड़ेगा अपने को अनवरत। इसका एक फॉर्मूला है, वो बाद में बता दूंगा मैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन माना साइन को, सेकंड फंक्शन माना कोस n टी को, इसको एक बार और खोल के कर दिया तो क्या बचेगा, क्या अपने पास ये बचेगा। कैसे पता चला, देखो सोल्व करके बता देता हूँ। ये तो 0 होएगा ही, सही पता है तुमको, साइन 0 होता है। अब इसको सोल्व किया आप लोगों ने तो क्या बचा, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब क्या होगा, ये 1/n² आएगा और माइनस कोस टी और कोस n टी आएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो तो कोस x से वैल्यू -1 और कोस n पाई की वैल्यू -1 की पावर बार n और -1 वहाँ से बाहर आ जाएगा, सो -1/n² -1 की पावर n + 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा अब तक तो, ठीक है ना। देखो ये तो 0 आएगा, इसके बाद इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से कैसे करेंगे, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो मैंने इसको खोल दिया, ये -1 की पावर n को बाहर ले लिया और ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन कोस का माइनस साइन और इसका फिर से दोबारा कर दो, है ना। पर इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा चलेगा, अपना काम यहीं से हो रहा, यहीं से अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा सोल्व भी नहीं करना है। और बी एन आ जाएगा 0, रख दो वैल्यू, एक्सपेंड कर लो, हो जाएगा बस। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + x², so -π/2π and we have to prove π²/6 with this. So we know a0 is this value and -π/2π x is odd function, so in this interval it will be 0, only in this interval function will be defined, so 2π²/3 will be final value of the integration and n equal to 1/t माइनस 2t f of x, है ना। यहाँ t वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे f of x है, इसलिए यहाँ पे dx आएगा तो ये -π से +π वेरिएबल लग जाएगा। अब ये फंक्शन कौन सा है, देखो ये तो ओड फंक्शन आएगा तो ये तो 0 आएगा, ओनली दिस फंक्शन विल बी सॉरी, हाँ ये तो ओड फंक्शन आएगा ना, और ये ओनली ये इवन फंक्शन आएगा। सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट x² cos x, है ना। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू 0, ओनली दिस विल बी x² ds, ये वाला। सो फर्स्ट फंक्शन ये तो 0 की तरफ जाएगा ही सही, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का 2x और इस पूरे का फिर से सो साइन का कोस पाई एन स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इसका फिर से कर दो, क्या बचेगा x का 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा x का 1 बचेगा और इस पूरे का दोबारा से, तो अब की बार क्या आएगा n क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा n क्यूब आएगा, बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, n क्यूब आएगा 0 to pi। So ultimately it will be 0 and we left with sin be 0, this sign will be 0, only we are left with this, so 2 pi, okay, 2 pi and cos n pi minus 1 की पावर n and minus cos 0 minus 1 by n square, so we left with this 4 by n square minus 1 raised to the power n. Thank you. Rest question will be done in next classes. Thank you very much.